let me give you the topic today for the GD, and that is impact of mobile phones on children. Impact of mobile phones on children. So this one is the topic, impact of mobile phones on children. So I give you 2-3 minutes and then we start on this. Okay, so I think one of you can start the discussion now. Good morning, friends. My Yes, name is sir. Shivam. I'm happy to start the discussion. In my opinion, this is the topic of current relevance, and in my belief that there are some positive aspect of this and some negative aspect of this. According to me, there are many negative aspects rather than a positive aspect. So the negative aspects are because of mobiles. Today, eyes are basically eyes weak हो रही हैं day by days of the children. एंड बेसिकली उनकी आउटसाइड एक्टिविटीज जो है इनरोलमेंट जो है वो कम हो रहा है और जो मोबाइल की तरफ से है वो अट्रैक्शंस काफी बढ़ रहा है और कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स जो हैं वो ये है कि उनकी जो एजुकेशन है वो बेस्ट इंस्टीट्यूशन से हो पा रही है और होम में हो पा रही है जिसकी वजह से उन्हें आउटसाइड नहीं जाना पड़ रहा है सो नाउ आई इनवाइट यू टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट In my opinion, हेलो फ्रेंड्स, mobile हेलो। were just जैसा कि हमने देखा कि हमारे दोस्त बता रहे थे कि मोबाइल के बहुत सारे गलत और सही इफेक्ट भी बच्चों पे हो रहे हैं। तो मेनली मैं उनसे सहमत भी हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मोबाइल के जो इफेक्ट्स है उनमें से हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले तो एक तो फिजिकल जो उसके बैड इम्पैक्ट बच्चों पे हो रहे हैं, और दूसरे मेंटल लेवल पे भी बैड इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो फिजिकल लेवल में मतलब जैसे जैसे हम जब बच्चे थे, 90s के हम सब किड्स थे जनरली, तो हमारे टाइम हम घर के बाहर खेलते थे तो हमारा फिजिकल एक्टिविटी होता था और हमारा हेल्थ भी काफी अच्छा रहता था। और कंपेयर टू अभी के बच्चे जो मोबाइल में खेल रहे हैं,
उनका कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रहा है, वो घर पे सिर्फ एक जगह पे दिन भर बैठे बैठे रह रहे हैं, दो दो 3 3 घंटे। तो उनका उस तरह से फिजिकल जो Yes, you are right. The वो भी physical लॉस हो activity रहा is है। going to be less. एंड दूसरा जो होता है कि मेंटल मेंटल जो होता है, लेट मी कंप्लीट। मेंटल जो होता है तो कि मतलब उनको ना ही किसी से कम्युनिकेशन हो रहा है, उनका कम्युनिकेशन स्किल दो अपने दोस्तों से बात करके जो अच्छा होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, या फिर एक जगह पे बैठ के एक ही सामने वो मोबाइल को देख देख के उनका जो दिमाग में चिड़चिड़ापन आ रहा है, या फिर और भी कई सारे मेंटल इश्यूज आ रहे हैं। Yes, I agree. ऐसा But हो if सकता we है। go to the base route, mobiles were just meant for communication at our times. But since COVID, mobile has become an integrated part of all our lives for every age group. But a certain age group is getting exposed to the mobiles now at a very earlier stage, and that are children. Yeah, And I also want to add some points. It's depends on how the children choose that mobile, or which purpose they use the mobile. It's also depend its use in positive way or negative way. yes, of course, you are right, because positive and negative impacts are of every issue. But also, we can see that the positive impact is that very powerful schooling tools are being used, like Google Classroom and Google Meet. Google Classroom has made the work of teachers also very efficient, and but also because students have now internet access, they can access many things which are beyond their scope. And maybe we can have a solution about it, that we can put Limit the restrictions. things. We can put restrictions which can be that decision can be taken by the parents, because and अभी के टाइम क्या हो रहा है कि बच्चे लोग इजी एंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल फोन ज्यादा यूज कर रहे हैं। और अगर हम बच्चों के लिए बात करें तो उन सभी लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं है, वो घर के मोबाइल फोन ज्यादा यूज करते हैं कि उनकी पेरेंट्स के। सो पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो उन लोगों को भी इस बात से केयरफुल रहना चाहिए कि बच्चे कितने फोन क्यों यूज कर रहा है और कैसे यूज कर रहा है, कि उसका उसे कुछ उसको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें पेरेंट्स को ख्याल रखना चाहिए। also Yeah, if we see यस the, बिल्कुल। Yes, friends. let me Yes, friends. complete. Okay. Also, यस we यस see प्लीज। that the school counselors are nowadays having this opinion that children are learning many slangs due to the web series they watch, because they have everything to their hand. So I think this is a negative impact which parents can only monitor. Yes, or no, that's the major impact, because we also don't know what internet basically whole world in front of them. What they took, they are positive way in a negative way. What they looking for that internet, it's the main situation. Friends, in my point of view, during the COVID, online classes are more. They are coming very fastly. In that time, the mobile phones are available to the children, and at the same time, one of our friend will tell that the nowadays the children are addicted to the mobiles. They don't interact with the other relations, so they don't have maintain good relations. And one more point is the age group below 15. The in that children, that age children, if you give mobile phone, they don't know what to use. Maybe the chance is more they entertain the movies. Yeah, the chances So is more that to point attraction. के लिए वो ज्यादातर फोन को यूज कर रहे हैं और इससे उनकी आईज का जो कंडीशन है वो दिन के दिन खराब होते जा रहे हैं और वो सोशलाइज भी नहीं हो पा रहे हैं कुछ केसेस में। Yes, Yes, I and agree. यस day by यस day the बराबर है IIM आपकी बात classes are increasing, and the number of IIM is increasing for the only for the small children, for the age of 10, 12. और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फिजिकल स्पोर्ट्स के अलावा फिजिकल स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा अटैच नहीं होकर मोबाइल गेमिंग की तरफ ज्यादा फोकस्ड होते हैं। वो इसकी वजह से वो बाहर नहीं जाते हैं तो उनका फिजिकल लेवल पे भी बहुत सारे दिक्कतें हो जाती है। हाँ हाँ लेकिन And academic, बराबर है आपके साथ। और देखिए दोस्तों इसमें कैसा है, जैसे कि
हर हर चीज का कुछ मतलब लिमिट में आप अगर ले रहे हो तो अच्छा होता है, लेकिन जब लिमिट के बाहर कोई भी चीज जाती है ना तो उसका बैड इफेक्ट होता है। जैसे ड्रग्स भी हम लेते हैं ना, तो फिर उसका जब लिमिट में होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, हमारे वो डिसीज को ठीक कर देता है। लेकिन जैसे लिमिट के ज्यादा, जब बच्चे दिन में थोड़ा सा टाइम पढ़ाई के लिए अगर मोबाइल यूज करते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है, या फिर जो कुछ भी नॉलेज इन्हांस करने के लिए मोबाइल का यूज करते हैं तो वो अच्छी बात है। लेकिन दिन ब दिन वो कार्टून्स वगैरह या फिर और साले जो वीडियो गेम्स है वो अगर देखते ज्यादा रहेंगे तो ये बच्चों के लिए बहुत ही हार्मफुल है। और मुझे ऐसा लगता है कि माता पिता ही एक वहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं उनको, और दिन में से एक शेड्यूल फिक्स करके उस शेड्यूल में बच्चों को मोबाइल वगैरह देना चाहिए, और उनको उनकी तरफ मॉनिटरिंग करना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, या गेम खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं। यस माय ये फ्रेंड्स, सब जो वहाँ पे एडिक्शन है डे मॉनिटरिंग बाय करना डे बढ़ता चाहिए। जा रहा है, बिकॉज नए नए गेम्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, नई नई इवेंट्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, नई नई मूवीज एंड सीरीज इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो फूड डाइट्स हैं बेसिकली जो चिल्ड्रंस हैं उसके बिना कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं। और जो फिजिकल एक्टिविटीज के बारे में आप बता रहे हैं माय फ्रेंड्स, दैट्स द राइट। बेसिकली जो फिजिकल एक्टिविटीज जो आउटसाइड ऑफ द डोर होती थी वो इंडोर हो रही है बेसिकली नए नए गेम्स की वजह से। Yes, But friends, Shivam talk about the games. We know about one of the game that is PUBG. यस If you are addicted at the age of 17 or 18 for this game, the child will lose very effective age periods. In that but age, there is the main age to setting our goals. Because of uh, addicting these games, he lost effective years of at that time. as we are talking disadvantages of the mobile exposure to the kids, I would also like to point out that the mobile awareness which has been created in children, they are taking more and more part in competitions, in school competitions. Nowadays, the participation of schools in various competitions in India has increased a lot, and government has also taken many new initiatives for creative technological interventions by small kids. So that is a positive aspect. This is a good point that Yes, yes. there are many competition because of this internet. Children can easily participate in this competition and enhance their skill or yeah, knowledge. getting more opportunity to the worldwide, Yes, yes, yes. basically every competition and सही every बात है। field. At this point, I will also like to invite others to contribute in the discussion. Yeah. Yes, Impact of phones are both advantages and disadvantages. But I think parents or elders should aware of it. What these children are take from mobile as positive or negative, because there are too many websites which were not for children. So I think both elders are should look to it. So basically there are positive and negative impact both, but it's depend on the children what they use this tool for. Yes. ये जैसे कि मैम बता रहे थे In child stage, कि वहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट भी बहुत सारे हैं वहाँ पे, कि जब अभी नेशनल लेवल को कंट्री लेवल पे बच्चों को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है, या फिर बहुत सारे ऐसे क्लासेस ट्यूशंस वगैरह है जो कि हमारे लोकल एरिया में नहीं मिलते थे, तो अभी मतलब बहुत से अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल हो रही है, बहुत अच्छी टीचिंग भी अवेलेबल हो And रही है। तो एक एक साइड से एक लिमिटेड टाइम के लिए बहुत ही अच्छा, मतलब लिमिटेड टीचिंग के लिए बहुत ही अच्छी बात है ये। और ये एक पॉजिटिव साइड भी बहुत अच्छी है कि yes my friend, अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा मिल रही है। yes my friend, new बच्चे तो technologies are ये सब learning कुछ by नहीं समझ children. सकते हैं। कुछ एज लिमिट, अगर मैं 5 से 10 साल के बच्चे के लिए बात कर रहा हूँ तो वो इस बात से कोई उसको लेना देना नहीं क्या है कि वो को ग्लोबल एक्सपोजर क्या है और कंपटीशन कहाँ से एनरोल करता है, तो ये सब कुछ तो पेरेंट्स को देखना पड़ता है। तो इस बराबर, मामले में वो तो बात सही पेरेंट्स है। को ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। तो Yes my friend, अदरवाइज on new Yes, yes. technologies also learning the children nowadays, like coding, like developing game, developing websites. The small children are learning this in the childhood also. Also, the apps like Facebook, I mean, I'm stating a disadvantage that apps like Facebook and Instagram, they also develop insecurity in children because they are continuously seeing who is tagging their photo, who is not following them, who is following them, and this is a social dilemma which has occurred in the school premises itself.
school is a place for education, but now these things have also been introduced in their lives. So I think so there is a negative impact also. There was one option to control the children's mobile by Google parenting. But in this But case, it the is parent limited. the parent must know about this. If the parent does not have that much knowledge, there was a chance the children will deviate from the. यस यस Yes. पेरेंट को थोड़ा मॉनिटरिंग करना चाहिए उसमें, क्योंकि वही है जो कि वहाँ पे अच्छे से ध्यान दे सकते हैं I और don't agree बच्चों को गलत to रास्ते पे जाने my friend to this point because it's not about how the parents can basically ये वो point नहीं है कि parents हर time देख सकते हैं उन childrens को. It's about आप किस तरीके से उनको सिखा रहे हैं students को ताकि वो खुद enjoy लेके studies को follow up करें and उसका अच्छा उपयोग कर सकें because you can't see children 24/7 hours. To this point, I can add that because of the mobile phone and exposure to series and YouTube, the kids have become less obedient in class, and I don't think teachers and parents both have to collectively contribute to this thing. Otherwise, Yes. it's not यस मैम realizable. यस Yes, Anima. जैसे स्वर्णिमा और शिवम ने बताया कि प्रॉब्लम छोटे बच्चों के लिए ज्यादा है, क्योंकि छोटे बच्चों को हम 24 आवर्स मॉनिटर तो नहीं कर सकते। जैसे मोबाइल देखेंगे वो यूज करना चालू तो कर ही देंगे, तो उसके लिए क्या है कि कुछ पर्सनलाइज कर सकते हैं या कुछ ऐसा कुछ हम डिसेबल कर सकते हैं एप्लीकेशन जिनसे वो बहुत ही कम गेम खेल सके या उसका इफेक्टिवली यूज कर सके या यूज ही ना कर सके या किसी को कॉल करके परेशान ना कर सके। काफी बार हमने ये सब देखा है कि ये सब होता है छोटे बच्चे के लिए। लेकिन जैसे ही बड़े होते हैं, जैसे वो स्कूल में आते हैं या केजी में आते हैं, तो सराउंडिंग एनवायरनमेंट से सिंक्रोनाइज होने के लिए मोबाइल मस्ट है, इसे कोई वो नहीं कर सकता। इससे डिपेंड भी करता है कि उसके पेरेंट्स कितना इसके लिए अवेयर है और बच्चा किस तरह से इसे यूटिलाइज करना चाहता है जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। उसके बाद छोटे बच्चों के लिए तो मोबाइल थोड़ा डिस्ट्रैक्शन तो है ही। Yes, sir, because they don't know what is right or what is wrong, wrong exactly. happening in their life. Yeah. Because they are attractive to the new games and new technologies which are coming, but they don't know what the health issues they are getting. Their eyes are getting weak and their bones are getting weak. They are struggling from the cervicals also, and the new diseases coming in the body because of watching more games and videos day by day. और जब छोटे बच्चे खेलने के लिए इकट्ठा होते हैं तो एक दूसरे से यही बात करते हैं कि मेरे पेरेंट्स के मोबाइल में ये गेम है, मैं ये खेलता हूँ, तो इससे एक दूसरे के ज्यादा वो होते हैं, इंस्पायर होके वो भी जाके खेलने लगते हैं। तो ये बड़ा इशू बन जाता है। Competition, my friend. Competition. But compared to our times, these kids have a better opportunity to explore their interest and choose the stream they want to work in as compared to us. Yes, Sonima, you're right, but this is literally basically less positive effect because there is no anything like attracting towards that. Basically, there is no interesting thing happening. I didn't get you. Basically, I want to say when you play a game, when a children play a game or series, they get certain happiness in their mind. But when you're saying education, they don't get any excitation and any enjoyment into particular this kind of things. No, that depends on children to children. We cannot generalize this thing. But I mean, if I'm comparing to our situation, if we would have known so many different opportunities, it would have been better. So this is a positive effect. Of course, there are negative impacts with yes. It depends on exactly how right. the children's. Because nowadays I saw so many children that they were discussing about IAS, IPS, what is IIT. There are mobile gave them exposure to get knowledge about this kind of educational and technologies and that all. So at our time, this option might be not we have. Yes. जब हमारे टाइम पे कोई इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए Exactly होती थी तो हमें किसी से पूछना पड़ता था या फिर न्यूज़पेपर में देखना पड़ता था। लेकिन इधर अभी ऐसा नहीं है। मोबाइल में आप एक मतलब वॉइस मैसेज भी डालो गूगल पे, यूट्यूब पे या फिर गूगल पे कुछ सर्च करो, आपको पूरा इंफॉर्मेशन ढेर सारा मिल जाएगा। किसी भी करियर के बारे में हो या फिर किसी स्पोर्ट्स के बारे में हो या फिर किसी सब्जेक्ट के बारे में, बहुत ही लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी बढ़ रही है। Yes, my friend, you're right. Yes, Basically, exactly.
लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलता है। यस, लेकिन बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं एज कम्पेयर टू एडवांटेज। हाँ दोनों तो वो तो होगा ही यार, हर चीज का एक तो एक अच्छा इफेक्ट भी होता है यार, एक तो बुरा इफेक्ट होता है। अब जैसा आप उसको यूज करोगे वैसे वैसे उसका ये होगा, मतलब परिणाम आपके ऊपर दिखेगा। हाँ, तो मेनली पेरेंट्स एंड एल्डर्स शुड टेक केयर ऑफ इट। यस यस यस, वो ये बात सही है, थोड़ा सा मॉनिटरिंग उसके लिए बहुत ही जरूरी है, चाहे वो पेरेंट्स की तरफ से हो या एल्डर्स की तरफ से हो, या फिर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या फिर कोई ऐप ऐसा कुछ डेवलप हो या आने और वाले फ्यूचर में, जो कि बच्चों को कुछ गलत साइट्स पे या फिर वो और गेम्स को maybe we खेलने के can लिए थोड़ा कंट्रोल कर सके। or Yeah, maybe you we are नहीं can right. ऐसे There introduce are ऐसे the certain एप्लीकेशन apps, सुने, but they're limited to ऐसे their ऐसी interface एप्लीकेशन only. है, ऐसी एप्लीकेशन है, वेबसाइट सब कुछ अभी है ही, एग्जिस्ट करता है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं तो वो एक्स्ट्रा स्मार्ट हो जाते हैं और वो ये भी जान लेते हैं इसको डिसेबल कैसे करना है। मैंने देखा है Yes, so काफी। and we there can are हाँ हाँ हाँ, तो disconnected. उसमें These और applications डेवलपमेंट are की जरूरी है। disconnected. हाँ वही वही। so we can Yes. introduce the course in the school, a small course, short course on this for creating more awareness among students. क्योंकि Yes. 100% फिल्टर 100% ऑब्जर्वेशन तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई ना कोई Yes, विंडो तो यस रहेगा यस, ही जहाँ पे उसको but डिसेबल this कर। can be a small initiative by the teachers so that parents and teachers can या collaboratively contribute Yes. to this. तो सोसाइटी बेसिकली इट्स जो सोसाइटी। जितने सारे बैड इफेक्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, वो आई थिंक मेरे लिए, मैं ये कह सकता हूँ कि इंटरनेट से ये सारी की सारी प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो अगर हम बच्चों के ऐसा कोई गैजेट्स दे जिनमें इंटरनेट एक्सेस करने की कोई सुविधाएं नहीं है, लेकिन उनमें स्टोरी बुक, आजकल तो You are thinking स्टोरी like बुक हाँ Kindle. पीडीएफ ये, में मिल जाता है। हाँ तो ये ये मैं सब इनसे कुछ सहमत अगर हूँ। अगर बच्चे लोगों को अगर समझाया जाए कि ये पढ़ना चाहिए, कि ये अच्छे Yes. होते हैं, ऐसे कुछ तरह से अगर पेरेंट्स की तरफ से कोई सपोर्ट मिले तो इट विल बी बेटर Yes, इनिशिएटिव। exactly हाँ that ये एक was अच्छा my वे है point. वैसे। Yes, यस यस यस, that's a great way. पॉसिबल Yes, तो when आइडियल तो पॉसिबल है कि प्रैक्टिकली इतना ही वो रहेगा नहीं, क्योंकि वो जस्ट बुक लाइक हो गया तो उसको फेंक देगा। इंटरनेट ही है जो बच्चों को मोबाइल की तरह अट्रैक्ट करता है। तो इंटरनेट को ही कैसे हेल्दी किया जाए उसके ऊपर ही ज्यादा फोकस करना चाहिए, या स्कूल में ऐसे कोई अवेयरनेस प्रोग्राम लाने चाहिए, या फिर पेरेंट्स को ही कुछ गाइड करना चाहिए। क्योंकि Uh, इंटरनेट कट करने से तो वो सिंक्रोनाइज ही नहीं हो पाएंगे, बच्चों के टेक्नोलॉजी लिए वगैरह जो पूछे या फिर अवेयरनेस उसके प्रोग्राम बाद में Arun, इतनी जैसे नॉलेज ले नहीं आप पाएंगे। कह रहे हो कि किड्स एक अलग से वो होना चाहिए, उसके लिए एक स्पेशल ऐप होनी चाहिए, but there is a app by Google, there is a app by Amazon, but basically they are limited to their interface only. So how much we try, but there are certain apps the children can play For which children, are I above think 18s. there must be some limitation. Otherwise, they will be float in the sea. So it's coming Just down like to the values we are inculcating in the Yes, children Yeah. in the end. it's at coming the down to the conclusion. values we are including. That use Sonima says like to introduce some classes in the schools to Awareness understand, program. We take it can and do it understand. from a very small age, Yes, so that from small age they are groomed in that way. groomed in that base to how to Yes. use it and what's the wrong and what's the good path Yes. to take. Yes. for a matured children, the technology will always help you, but the problem is the persons who are in the middle stage, they have to watch some series in YouTube. The suggestions will coming towards that channel only, so that will start editing to that series. Then after that, one more, that totally this he loses so much of time. And even it is a responsibility for both school teachers and parents as well, because technology is a double-edged sword. Yes. It's a responsibility for both parents and as well as teachers. Okay, so I think now we can conclude. Yes, Yes, friends, sir. we are reached to the good conclusion, and for the our conclusion is like there are some friends says that there are some problems like weakness of eyes and weakness of physical activities, weakness of bodies, and some says that there is a basically online education will get and latest information will get faster and faster.
and so we have a good discussion, and after that we conclude that that if the जो चिल्ड्रंस हैं उनको स्टार्टिंग में ही groomed और basically train किया जाएगा in their classes, so to understand that, make it understand that what is the right and what is the wrong way, so it makes the help to the childrens. Okay, done. Yes. Yes. Okay, let me now give you the feedback. See, 3 of you have started speaking. Swarnima, Shivam, and MS Tandel. I think you are. सर मैं रुद्रा हूँ. रुद्रा, तो ये क्या नाम लिखा हो तुमने? हाँ सर, वो मेरा महारुद्र शॉर्ट में लिखा है मैंने, सर टांगले सरनेम है. Okay, so Tandel has you 3 are speaking, right? बाकी आप लोगों ने आपको सीखना है. You people are to speak more. Praveen, you are not speaking at all. So only you 3 have spoken. Last time you were also not participating much, but you have spoken now. Speaking is the first stage. Tomorrow also, day after tomorrow also we do practice. So you start speaking, not talking to others, Hindi, English, anything. Like Shivam talked in Hindi, then Rudra also talked in Hindi. That is not a problem. You still speak it. But the thing is, you need to participate, and that comes with the practice only. It comes with more and more practice, and you should always be, ready that I need to speak, I need to participate. So 4-5 GD ke baad, you will come to the stage where you are talking, you are speaking. That stage will come, and if that stage comes, okay. So if that stage comes, then you will be in position to obviously participate and discuss. So that stage comes with the practice and 4-5 GDs, So be very, very careful that if I have not spoken, then I'll maybe eliminated. That thing should come in your mind. You need to practice. I mean, how to start GD, like Shivam practiced and he entered and he concluded also. You should always be ready with those lines. That the moment he says start, you should be in position to start. So if I am Shivam and me started at the same time, but no, Shivam was not a clash with you. Shivam spoke before you. I mean, he could take it, but then Rudra cut you when after Shivam you started speaking. So marks of Rudra will go down. When second time he cut me, then I told him that let me complete. First you time say I let me him complete. cut. Actually, in the GD you cannot say let me complete. Let me speak. You can't say that. So you should not cut somebody unnecessary because your marks will go down. But suppose somebody is cutting you, you cannot say that let me speak. In GD, you cannot do that. Because otherwise you will say, okay, let me speak. Nobody, I mean, that is a competition. In the competition, you cannot say let me run and you run slowly, first let me run. You can't say everybody is running, So in GD, this you cannot say that let me speak, listen so, to but if someone is cutting me 2-3 times, then how will I that is what the practice is. That is what you have to learn actually. If somebody is unnecessarily cutting you, he will be eliminated. The panelist will see that, like I told you, when Shivam finished, you started. When you started, then you started. Don't stop. The moment you start speaking something, don't stop. Keep speaking. Otherwise, somebody will cut you. Yes. Like Rudra entered and then you stopped and then he again entered. He kept on speaking. So when you are speaking something, don't stop. Keep on speaking it. If you think you are the first one. सर वहाँ मतलब वैसे वहाँ पे उनको कट करना नहीं चाहिए क्या? बहुत ज्यादा नहीं, मतलब ऐसे अननेसेसरी नहीं, पता लग जाता है उसको, जैसे किसी ने हाँ, पहले नहीं, स्टार्ट कर दिया। लेकिन क्या होता है सर, अभी इतने सारे है सारे, तो कभी तो वैसे तो हो ही जाता है ना कि कोई तो बोल रहा होता है, तो there is always a good way to cut, there is always a bad way to cut. जैसे you will see, I always cut people while speaking because I don't have, I don't want to waste time and I don't want to waste sentences. So what will happen is, you will observe me also. When you will be speaking to me, I'll not be listening your entire sentence. I'll be cutting you, but then I'll be cutting you in such a way that your query will also be completed, and I have spoken my words also. That is how it goes. So you should not cut somebody unnecessarily. सर वहाँ पे कंक्लूजन करने के लिए सबको मौका दिया जाएगा या अभी जैसे एक Only one. तो सब एक साथ बोलना पड़ेगा? Only one. They will not give chance to everyone. सर ये सब जानते हो कि किसी एक में तो सब चालू हो जाएंगे एक साथ, तो कैसे कर पाएंगे? होता नहीं है ना, अभी देखो शिवम अकेले तो था, सब कहाँ चालू हुए? अच्छा,
मतलब जो जितनी practice से फास्ट होता चालू है। कर देगा उसका चल जाएगा। जिसकी प्रैक्टिस होती है वही बोलता है कंक्लूजन में, दूसरा नहीं बोल पाता। ठीक है। ये प्रैक्टिस से आता है। अभी तुम्हारे जितने भी डाउट्स क्वेरीज हैं उनका एक ही आंसर है, प्रैक्टिस मोर, and then you will find that slowly you are in position to enter also, speak also, talk also, conclude also, introduce also. But that only comes with the practice. Simply understand that very first time when you enter in the water, you are not knowing how to swim. So irrespective of how many concepts I tell you of swimming, you will not be in good in swimming state, right? You need to practice, you will need to fumble, you need to sink, and then only you will start swimming, right? So GD is something like that. You can't Sir, expect performance to come immediately. Sir, today I tried to put many different points. Sir, was there any improvement from previous GD? Yes, you were giving points this time, and many points you gave, and those points the observer will always listen and give you some kind of credit of that. Like the point of early age which you are mentioning, like early age में ही बच्चों को मिल जा रहा है, that is something which is wrong. So वो एक unique point mention करेगा. जैसे everyone, if I talk about some of the worth points which are Shivam was talking about, positive negative aspect. Every topic has couple of aspects. So impact of mobile phone on children friends can be discussed. This topic is a currently relevant topic, as Shivam said. It can be discussed in two main broad categories. One, what are the positive impact, what are the negative impact. Certainly COVID has taught us that had mobile not been there, students would not have been in position to study, because laptop not everybody can afford. So it was largely because of mobile students could study, and it helps you to do good networking. Homework is being sent by teachers on mobile. If you don't know something today, you have access to online education through mobile. Those are advantages. What is disadvantage now? Eyes, like somebody said, like Rudra said, physical and mental, your health will not be good. You need to go out and play, don't be addicted to mobile. So those things were good. I mean, Shivam said divided it and he started. Rudra said, okay, physical, mental, and all these things. Swarnima, you cannot say, like Swarnima said, Swarnima, you cannot say, let me complete and all. That is not good. You gave early age concept, and Arnav said parents awareness is very important for parents awareness. That was a good point. Dula was talking about the movies, how students are watching movies, and also whatever good point you will give, they will note it. But largely practice. Yes, sir. सर मेरा पहला जीडी था ये, इसके पहले मैंने कल अटेंड वगैरह नहीं किया था। तो फिर मुझे सर ये पूछना है कि अभी इतने सारे बच्चे होते हैं साथ में, तो फिर बहुत बार ऐसा होता है कि हम बोल सकते हैं, लेकिन अदर्स लोगों को बोलने के लिए क्या हमें चुप रहना चाहिए? बोलने देने के लिए, उनको चांस देने के लिए हमें चुप रहना चाहिए, या फिर हम इसके पहले भी बोले तो और भी बोलते ही रहे हम? GD is not a group embeddedness, it is a war. You need to win that war by defeating somebody. तुम जीतोगे तो वो हारेगा, तुम हारोगे तो वो जीतेगा, ऐसा होता है जीडी में। तो क्या है कि तुम्हें अपना पॉइंट रखना है, पर ऐसा ना लगे कि तुम अननेसेसरी किसी को रोक रहे हो। आई गिव यू एग्जांपल ऑफ रनिंग। व्हेन यू आर रनिंग ऑन द ट्रैक, यू कैन नॉट होल्ड समबडी एंड ड्रैग हिम बैक एंड देन रन, यू कैन डू दैट। वो नहीं करना जीडी में, किसी को रोको अननेसेसरी, वो नहीं करना। तुम अपना दौड़ो, तुम्हें दौड़ने से कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को रोक रहे हो अननेसेसरी। सर किसी का जीडी खराब गया है तो उसको इंटरव्यू में बैठने दिया जाएगा या जीडी में? अब ये अलग-अलग वर्जन है। नो, दीज आर डिफरेंट वर्जन। लाइक IOCL में, HPCL में तो जीडी में तुम आउट तो आउट। IOCL में देयर इज अ मिनिमम मार्क्स, अलाउ करेगा वो बैठना। जीडी इंटरव्यू दोनों में अलाउ करेगा। और पावर ग्रिड में क्या है पता? बाद में देखेगा कि तुम्हारा मार्क्स अगर कम है 40% से तो तुम्हें पास नहीं करेगा। पावर ग्रिड में वो तुम्हें अलाउ करेगा, और मेरी जहां तक समझ है मिनिमम कट ऑफ नहीं है। 3% सर, 3% दिया है ग्रुप डिस्कशन को और 12% दिया है पर्सनल इंटरव्यू को, तो मेरे हिसाब से तो दोनों ही शायद लेंगे। आपको इंटरव्यू में 40% स्कोर करना है, 5 मार्क्स, अदरवाइज तुम नहीं। नहीं, फाइनल जो मेरिट बनेगा ना उसमें 3% जीडी का ऐसा लिखा है, और 40% तो मतलब समझ नहीं आया मुझे। निकुल वो मार्क्स है। कितना मिनिमम तुम्हें इंटरव्यू में लेना है कि पास हो जाओ?
तुम्हारा ऑल इंडिया रैंक 1, इंटरव्यू में है 2 नंबर, तो तुम्हें लेगा नहीं वो। वो तो समझ गया सर। ये है क्वालिफाई इसलिए, और वो जीडी भी क्वालिफाइंग कर देता है। अगर तुम जीडी में कुछ ना बोलो, चले जाओ, कुछ ना बोलो, नंबर आया 0, अब क्या 0 नंबर लेने के बाद जीडी में क्या तुम्हें रख लेगा? टोटल मार्क्स जोड़ने के बाद ये डाउटफुल होता है। इसलिए ट्राई टू डू गुड इन इंटरव्यू ऑल्सो एंड जीडी ऑल्सो। ओके सर, ओके। 40% you have to score, right? सर आप कह रहे थे कि फर्स्ट स्टेप है ये सिर्फ बोलना, तो सेकंड और थर्ड आगे के स्टेप सर? जीडी अच्छा बोलना, अच्छा बोलना, फ्लुएंटली बोलना, काम की बात बोलना दूसरा स्टेप, और फ्लुएंटली काम की बात बोलना तीसरा स्टेप। बोलना बेकार बोलना चाहे कैसे बोलना वो पहला स्टेप, काम की बात बोलना दूसरा स्टेप, काम की बात अच्छे तरीके से बोल देना तीसरा स्टेप। ये तुम अभी पहले कुछ एयर लेवल बोला तो उसके भी मार्क्स कट हो जाते होंगे ना, मतलब थोड़ा सा डिस्कशन को अगर अलग वे में हम ले जा रहे हैं, हाँ होते हैं, अननेसेसरी वे में, बिल्कुल होते हैं सर। जैसे कि मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक्सपेक्ट बात कर रहा था लाइन टू लाइन, बट मेरे को में ऐसा हो रहा था कि कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद नेगेटिव 2 आ रहे हैं, फिर एक पॉजिटिव आ रहा है, तो इससे कोई फर्क पड़ता है सर? नहीं, देखो जितना तुम अच्छा बोलोगे उसका तुम्हें ज्यादा मार्क्स मिलेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। प्रैक्टिस से आएगा सब, तुम्हें प्रैक्टिस करते जाओ, राइट? तो क्लासिफाई करो और उसकी डायरेक्शन में बोलते जाओ। ही विल ऑलवेज गिव यू मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट अ गुड पॉइंट यू से एंड हाउ यू स्पीक, हाउ गुड you speak and how you speak. These are very important, but this all comes with the practice, as I told you. So keep practicing. Tomorrow also I'll give you a slot. Almost every day you will have slots, and maybe 2 slots with me and one more mentor, so you will have more slots also, as we keep on progressing forward, right? So do your GD tomorrow and after tomorrow with me, and Monday onward you will have 2 slots for GD, right? Shall I take leave of you now and keep preparing for this, right? Thank you.